Assalamu alaikum. Welcome to the Urdu Sikhiye podcast, to episode number 26. In this episode, I'm going to focus on a blog post by Seth Godin called Beginning is Underrated. The words in this blog post encouraged me to begin the Urdu Sikhiye project, so it's very close to my heart. And if you follow Urdu Sikhiye on Instagram, then you might have noticed how I started translating the words from this blog post with the help of other Urdu speakers. But then the words just got too difficult, and I might have also gotten distracted. But I always seem to come back to Urdu. I haven't figured out why exactly just yet. Anyway, as always, I'm constantly meeting new people because of Urdu Sikhiye, one of the several perks of sharing this interest of mine with the world. So I partnered up with Mansoor Khan, who edits Urdu Sikhiye's video lessons and podcast episodes, and he speaks Urdu beautifully. He also reads Urdu poetry on his Instagram page, so feel free to check that out if you're interested. I'll link to his page on our website. There's also a PDF for this episode, so you can download and read the full text of the blog post and its translation. So with Mansoor's help, I present to you Seth Godin's blog post titled Beginning is Underrated. Okay, तो पहली लाइन है Beginning is Underrated. तो सबसे पहला जो तर्जुमा था इस लाइन के लिए वो था शुरुआत को कम ध्यान मिलता है. शुरुआत को कम ध्यान मिलता है. तो मुझे कहा गया था कि शुरुआत के बजाय आगाज़ इस्तेमाल करना चाहिए. तो वो क्यों है? वैसे तो दोनों लफ्ज़ ठीक हैं, शुरुआत भी और आगाज़ भी. दोनों लफ्ज़ हम अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आगाज़ जो लफ्ज़ है वो चूँकि ये एक लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं और एक ख़ास राइटर ने इसको लिखा है, तो हमें भी लिटरेरी ज़ुबान ही इस्तेमाल करनी होगी, हमें भी अदबी ज़ुबान ही इस्तेमाल करनी होगी, ठीक है. और अदबी ज़ुबान के लिए जो दोनों में से ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है वो मैं समझता हूँ कि आगाज़ लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है शुरुआत के मुकाबले में. तो अगर हम शुरुआत को हटा के आगाज़ लिख लें तो होगा आगाज़ को कम ध्यान मिलता है या आगाज़ को कम ध्यान दिया जाता है. और फिर दूसरी लाइन भी थी, किसी और ने बताई होगी शायद, वो है आगाज़ की अहमियत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है. तो आइडिया सेम है लेकिन मतलब तो थोड़ा चेंज हो जाता है. तो ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन आप कैसे कहेंगे इस लाइन को? मैं इन दोनों से इसलिए एग्री नहीं कर रहा, मैं इन दोनों से इसलिए मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ क्योंकि इन्होंने वो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं किए जो राइटर ने इंग्लिश में यूज़ किए हैं, जबकि हमारे पास उर्दू में वही अल्फ़ाज़ मौजूद हैं. तो फिर क्यों ना वही अगर हम ट्रांसलेशन ही कर रहे हैं तो फिर क्यों ना हम वही अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करें जो कि उससे बिल्कुल करीब तरीन है. तो मुझे लगता है कि कम ध्यान मिलना वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है क्योंकि उसके लिए फिर इंग्लिश में और लफ्ज़ होते हैं. अटेंशन लफ्ज़ होता है ध्यान के लिए और अहमियत के लिए इम्पोर्टेंस लफ्ज़ होता है, जबकि हमें पता है कि इन दोनों में से कोई लफ्ज़ यूज़ नहीं किया राइटर ने. तो हमें जो मुझे करीब तरीन लफ्ज़ लग रहा है, अगरचे अंडररेटेड का एग्जैक्ट हम तर्जुमे उर्दू में हमारे पास लफ्ज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम उसको करीब तरीन ले जाएँ उसके. तो मुझे लगता है कि इसका जो ट्रांसलेशन होगी वो इस तरह हम कर सकते हैं कि आगाज़ को कमतर समझा जाता है. और फिर जिस शख्स ने इसको ये लिखा है कि आगाज़ को कम अहमियत दी जाती है, मुझे लगता है उसने इसका मफ़हूम बयान किया है, तर्जुमा नहीं किया. मफ़हूम और तर्जुमे में ये फ़र्क होता है कि तर्जुमा एग्ज़ैक्ट वही अल्फ़ाज़ को हम किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, जबकि मफ़हूम में हम थोड़ा-सा मतलब उसका बताते हैं, उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं. ओके, तो अगली लाइन है merely beginning, और इसका पहला जो तर्जुमा था वो था सिर्फ शुरू करना. लेकिन कुछ सोचने के बाद मुझे लगा कि बस शुरू करना बेहतर रहेगा. बस शुरू करना, merely beginning. आपको सही लग रहा है? आपको इसके बारे में कुछ बदलना है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है. बस शुरू करें या बस शुरू करना.
दोनों ठीक है। हाँ, क्योंकि ये किसी से कहा नहीं जा रहा है ना कि merely began, नहीं, ये है merely beginning, बस you know जी शुरू करने का जो एक्शन है, जो जी उसको बयान किया जा रहा है, ठीक है, बस शुरू करना, ये सही है। हाँ, बस शुरू करना, ये शुरू करने की चीज़ जो है वो that is what is underrated. ओके, तो फिर अगली लाइन है with inadequate preparation. तो सबसे पहले शुरू में मैंने इसका तर्जुमा ये था, पूरी तैयारी तैयारी पूरी तैयारी के बिना, लेकिन मुझे कहा गया था कि बिना के बजाय बगैर इस्तेमाल करना चाहिए, तो फिर हो गया पूरी तैयारी के बगैर, लेकिन फिर मुझे किसी और ने कहा कि मुनासिब बेहतर रहेगा पूरी के बजाय, तो हो गया मुनासिब तैयारी के बगैर। लेकिन आपने फिर कहा कि यहाँ पे बगैर जो है उसका मतलब है विदाउट, और वो विदाउट तो है नहीं, तो आप बताएं कि आप क्या ट्रांसलेट करेंगे इसे। मैं उसको वही ट्रांसलेट करूँगा जो राइटर ने ख़ुद अल्फाज यूज़ किए हैं, मैं उसी को ही उर्दू में तर्जमा करूँगा, कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब उर्दू में हमारे लिए इन जो 3 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं इस सेंटेंस में, वो एग्ज़ैक्टली वही अल्फाज हमारे पास उर्दू ज़बान में हैं। और विद के लिए साथ, इनएडिक्वेट के लिए नामुनासिब, जैसे एडिक्वेट का उर्दू में मतलब है मुनासिब, तो इनएडिक्वेट का मतलब होगा नामुनासिब, और प्रेपरेशन का वो तो आसान ही है, उसका मतलब होता है तैयारी। तो यहाँ पे हम अगर इन अल्फाज को जोड़कर तर्जुमा बनाएं तो वो होगा नामुनासिब तैयारी के साथ। बस शुरू करना नामुनासिब तैयारी के साथ। ठीक है, हाँ, बस शुरू करना नामुनासिब तैयारी के साथ। ओके, तो फिर अगली लाइन है because you will never be fully prepared. Because you will never be fully prepared. तो इसका सबसे पहला जो तर्जुमा था वो था क्योंकि आप कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे। तो मुझे तो लग रहा है कि ये सही है, और मैंने जब पढ़ा तो वो भी सही लग रहा था, लेकिन आपको लग रहा है कि हमें थोड़ा सा ऐसे बदलना चाहिए, तो आप बताएं क्यों। ये जो भी आपने तर्जमा किया है ये बिल्कुल ठीक किया आपने, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर हम मज़ीद इसको खूबसूरत बनाना चाहें तो उसमें से हमें इजाफ़ी चीज़ें ख़त्म करनी होगी, काटनी होगी। तो हम ये कर सकते हैं कि जो अगर हम किसी लफ्ज़ के बग़ैर भी अगर कोई बात वाज़ेह है और पूरी है, तो फिर हम क्यों इजाफ़ी अल्फ़ाज इस्तेमाल करें और उसका हुस्न ख़राब करें। तो इसका मुझे लगता है जो इसकी ब्यूटी है वो यही है कि हम इसमें से कुछ लफ्ज़ निकाल दें, एक ही लफ्ज़ इसमें से निकलेगा, और वो ये कि हम इसका तर्जुमा इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि आप कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं होंगे। तो इसमें मैंने से लफ्ज़ नहीं पढ़ा, ना बोला है, तो मुझे लगता है से लफ्ज़ इसमें एक्स्ट्रा है, इज़ाफ़ी है, उसके बग़ैर भी ये बात कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन चूँकि आपको लग रहा होगा कि ये इसके साथ ठीक है और इसके बग़ैर शायद कुछ मसला है, तो मुझे लगता है कि हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे जुमले, बहुत सारी बातें ऐसे करते हैं जो कि हमें लगता है कि वो ठीक हैं, और वो गलतुल आम भी हो चुकी होती है और गलतुल अवाम हो चुकी होती है। अब ये नई टर्म्स हैं, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे, गलतुल आम और गलतुल अवाम में। ओफो, हाँ। हाँ, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर हम हाँ, लेकिन अगर हम देखें कि अदबी लिटरेरी लैंग्वेज को अगर हम देखें तो उसमें तरह के बाद से नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले लें से को, मेरे ज़हन में अभी ये बात आई है। अगर मैं कहूँ कि मैं आप सा हूँ, तो मैं कहूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं आप जैसा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे तरह लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो मैं कहूँगा मैं आपकी तरह हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब से इस्तेमाल नहीं हुआ, मैं आप सा हूँ, आपकी तरह हूँ, आपके जैसा हूँ। तो वो से जो लफ्ज़ है वो मुझे लगता है तरह के अंदर ही ज़म हो जाता है, और तरह और से को अलग-अलग नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, हाँ, सब समझ में आ गया। ओके, तो फिर अगली लाइन है with imperfect odds of success, और हमने इसका तर्जुमा किया था कामयाबी के गैर मुतनासिब इम्कानात के साथ।
कामयाबी के गैर मुतनासिब इम्कानात के साथ. और इस तर्जुमे से आप मुत्तफिक हैं. ठीक है. Okay, so I completely forgot to go over the next line with Mansoor while I was on Zoom with him. So I asked him to translate and record it for us on his own. So the next line in English is, because the odds are never perfect. And this is the translation. क्योंकि इम्कानात कभी भी कामिल नहीं होती. कामिल लफ्ज़ यहाँ मुकम्मल लफ्ज़ से निकला है. मुकम्मल का लफ्ज़ होता है कंप्लीट और कामिल का मतलब होता है परफेक्ट. इस लाइन को हम दूसरे तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसका तर्जुमा कर सकते हैं. कामयाबी के गैर मुतनासिब इम्कानात के साथ. क्योंकि इम्कानात कभी भी यकीनी नहीं हो सकते. यहाँ पर इम्कानात और यकीन दो आपस में ऑपोजिट लफ्ज़ हैं, मुतज़ाद लफ्ज़ हैं. क्योंकि आप कह सकते हैं कि इस बात का इम्कान है, इस बात के चांसेस हैं, और दूसरी तरफ आप ये कह सकते हैं कि इस वाक़ये की या ये बात परफेक्ट है, ये बात यकीनी है. तो अब इनमें से आप जो भी तर्जमा लेना चाहें वो ले सकते हैं. तो फिर अगली लाइन है begin. बस begin, शुरू करें. तो that's simple enough. तो हाँ, तो फिर लास्ट लाइन पर जाते हैं जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है. तो है with the humility of someone who's not sure and the excitement of someone who knows that it's possible. तो इसमें तो मैंने इसके लिए तो कोई तर्जुमे थे नहीं. तो आप मुझे बताएं कि आप इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे. इसके लिए मैंने 3 तर्जुमे सोचे थे, बल्कि मैंने अपने एक दोस्त की हेल्प ली थी. मुझे ख़ुद भी इसका एग्जैक्ट तर्जुमा नहीं मिला कहीं से, क्योंकि अगर हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा भी करें तो भी हम उन लफ्ज़ को ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते ताकि उससे एक प्रॉपर जुमला बन जाए जैसे इंग्लिश में बना है. लेकिन हमने फिर भी उसका, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि मफ़हूम के तौर पर हम उसका मतलब ले सकते हैं, तो उसके लिए फिर मेरे पास 2 या 3 तर्जुमे मौजूद हैं जो कि मैं बताना चाहूँगा. तो इसमें लिखा है बिगिन, शुरू करें या शुरुआत कीजिए या आगाज़ कीजिए या करें, उस शख्स जैसी आजिज़ी के साथ जो बेयकीनी. अब बेयकीनी के लिए हमारे पास जो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो है नॉट श्योर. ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास 2 लफ्ज़ हैं उर्दू में, बेयकीनी और अदम एतमादी. अदम का मैंने आपको पहले बताया था कि अदम और वजूद कहते हैं एग्जिस्टेंस को, और अदम कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंस को. ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि ये कायनात, ये यूनिवर्स अदम से वजूद में आई है, मतलब कुछ भी नहीं था और फिर वजूद में आ गई. खैर वो साइंसी बात है, लेकिन मैं ये बात अदम की बात कर रहा था कि अदम का मतलब है कुछ भी ना होना, कुछ भी ख़त्म. तो यहाँ पे नॉट श्योर का मतलब अदम एतमादी. एतमाद का मतलब कॉन्फिडेंस होना किसी पे या श्योर होना किसी बात के मुतल्लिक, और अदम एतमाद नॉट श्योर. ठीक है, मैं शुरू से फिर आता हूँ. इस शख्स जैसी आजिज़ी के साथ जो बेयकीनी या अदम एतमादी में मुब्तला हो, और उस शख्स जैसे जोशो जज्बे के साथ जो जानता हो कि ये मुमकिन है. ये एक तर्जुमा है. फिर दूसरा तर्जुमा अगर हम करें, उसमें फिर वही शुरुआत कीजिए, आगाज़ कीजिए या आगाज़ करें. एक बेयकीन शख्स की आजिज़ी लिए हुए और एक ऐसे शख्स का जोशो जज्बा लिए हुए जो जानता हो कि ये मुमकिन है. तीसरा तर्जुमा हम इसका ये कर सकते हैं, बेयकीनी की आजिज़ी और मुमकिनात के जोशो जज्बे के साथ शुरुआत कीजिए. यानी कि वो जो शुरू में लफ्ज़ था उसको हम आखिर में ले गए. शुरुआत को हम पहले 2 जुमलों में हमने उसको शुरू में इस्तेमाल किया और तीसरी में हमने उसको आखिर पे इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मतलब तीनों का एक जैसा ही है. So that was the full translation of the blog post, but I thought I'd add a bit more commentary in English, at least for the last line, which I hadn't looked at before speaking to Mansoor. So I listened to
what we just heard several times. And when there is one complicated sentence right after another, then I have to pause and examine that sentence before moving on to the next one. This is true in any language, really, but especially in Urdu. So the most complicated sentences for me in this post are the last 3 lines, mostly because I have interacted with them the least. But I'll start off with an earlier line, which is कामयाबी के गैर मुतनासिब इम्कानात के साथ. I don't know if you can hear, but I'm trying to do the gh sound from the throat, and it's not really happening. But so the G, that gh sound, is actually ghain. So it's a little throatal. So it's कामयाबी के गैर मुतनासिब इम्कानात के साथ. Individually, I understand each word, right? Kamyabi means success. Mutanasib, which is definitely brand new to me, means proportionate. This makes me think of a balancing scale. So if you have equal weight on both scales, then the proportions are equal, which we'd say is close to perfect. That's mutanasib. Now, if we want to make it imperfect, imbalanced, then we add the prefix ghair. Ghair mutanasib. This means imperfect. Then we have imkanat, which is relatively new as well. It means odds or probability. And saath means together or with. So kamyabi ke ghair mutanasib imkanat ke saath means with imperfect odds of success. Now let's examine the last line, for which Mansoor gave us 3 translations. I thought I liked the first one best, but now that I've spent more time with each line, I think the second one might be my favorite. So before I read the line, it really becomes important how the line is read in order to extract the correct meaning. I was reading it word by word, but the meaning was lost, so be mindful of that. I must have replayed Mansoor's recording at least a dozen times to sound as close to him as possible. Speaking of recording, I would love for you to record yourself saying one of these lines or all of these lines on any of the social media platforms. Be sure to tag Urdu Seekhiye. It would be so cool if this went viral. And if you can think of an even better translation, feel free to share that with me. All right, so the first translation of the last line is शुरुआत कीजिए उस शख्स जैसी आजिज़ी के साथ जो बेयकीनी या अदम एतमादी में मुब्तला हो और उस शख्स जैसे जोश व जज्बे के साथ जो जानता हो कि ये मुमकिन है. So I didn't match the rhythm and pitch that Mansoor achieves, but I'll talk more about that in just a bit. So Mansoor started with शुरुआत कीजिए. That just means start, begin, yeah? Then for with the humility of someone who's not sure, we have उस शख्स जैसी आजिज़ी के साथ. Humility is ajzi. The concept of not being sure follows. So then he says, Beyaqini could mean unsure, or Adam etamadi could mean unsure or not confident. So the line again is उस शख्स जैसी आजिज़ी के साथ जो बेयकीनी या अदम एतमादी में मुब्तला हो. Mubtala hona, as far as I'm familiar with it, means to be involved in. I guess he felt that it would be best to use mubtala hona. What this just means is that I'm feeling doubtful. So if someone beyaqini ya adam e'tamadi mein mubtala ho, that means that that person is unsure. There are so many words being used in Urdu to express the same short sentiment in English. Moving on, then in English, Seth Godin says, and the excitement of someone who knows that it's possible. In Urdu, that's और उस शख्स जैसे जोश व जज्बे के साथ,
और उस शख्स जैसे जोश और जज्बे के साथ जो जानता हो कि ये मुमकिन है. So if you hear Mansoor say this line, he says it with a certain rhythm that I can't replicate. You'll notice that I tried to say josh or jazbe, like quickly. And that's because the listener needs to know that the word jaise is referring to josh or jazbe, which means excitement. Josh or jazbe. So jaise josh or jazbe means like the excitement of a person. It's not saying like the person. No, it's saying like the excitement of a person, right? उस शख्स जैसे जोश और जज्बे के साथ. Like the excitement of that person who knows that it's possible. So that would be जो जानता हो कि ये मुमकिन है. Mumkin means possible. And janna means to know. So, jo janta ho, that means the one who knows. Jo janta ho, who knows. Ke ye mumkin hai, that it is possible. I think I'll have to read this so many more times to make it my own. The English version, I've definitely made my own. Okay, let me read it one more time and see if it feels at all as magical as when I read it in English. शुरुआत कीजिए उस शख्स जैसी आजिज़ी के साथ जो बेयकीनी शुरुआत कीजिए उस शख्स जैसी आजिज़ी के साथ जो बेयकीनी या अदम एतमादी में मुब्तला हो और उस शख्स जैसे जोश और जज्बे के साथ जो जानता हो कि ये मुमकिन है. Nah, not there yet. In English, this line is, with the humility of someone who's not sure and the excitement of someone who knows that it's possible. All right, let's look at the second translation of this last line. So he says, शुरुआत कीजिए एक बेयकीन शख्स की आजिज़ी लिए हुए और एक ऐसे शख्स का जोश और जज्बा लिए हुए जो जानता हो कि ये मुमकिन है. This translation shares many similarities to the previous one. After looking at them both, it seems like the second one is easier. This idea of lena, so lena means to take. And here, the way it's written, it means having taken. So this sentence is saying, having taken the humility of a person who isn't sure, and having taken the excitement of a person who knows that it's possible. Start. Like with this knowledge, start. It's not a complete picture, it's not full knowledge, but start anyway. Yeah, I think this is my favorite translation of the three. Now let's take a look at the last one, which is the shortest. And it is, बेयकीनी की आजिज़ी और मुमकिनात के जोशो जज्बे के साथ शुरुआत कीजिए. So again, there isn't anything new here, but the idea is slightly different. This says, with the humility of uncertainty and with the excitement of possibilities, start. So in the previous translation, the idea was that the humility and the excitement belonged to a person, right? But now that belonging to a person has been removed. It's speaking of these two concepts in general. Because this translation is brief, I like it very much, but I still think number 2 is the best. Let me know which one you prefer. Again, if you do recite any of these lines, be sure to tag Urdu Seekhiye. So there you have it. That was the explanation of the full blog post, Beginning is Underrated. I don't know about you, but I have already listened to this about 5 times to better understand each of the words, the full sentences, and the overall concepts. And I know I'll listen to this at least a few more times. Recently, because I have been having trouble sleeping, I listened to various podcasts
One of my favorites is the Duolingo Spanish podcast. And what I appreciate about it is that it doesn't have any loud music, allowing me to eventually doze off. So I've been mindful of this for this episode. This is why I have removed the intro and will no longer have the loud intro music going forward. In the off chance that you want to listen to any of these upcoming episodes while falling asleep, I invite you to do so. Hopefully our voices are soothing and you'll fall asleep to such a beautiful idea of starting something that maybe you've been putting off, that you know your future self will thank you if you started it. And not only that, your brain will be reminded of the idea of how beginning is underrated in 2 different languages. Before letting you go, I want to share that I'll be trying something new with this episode. I've created a Notion template for this episode, which allows you a lot more creativity in terms of how you interact and study a new language. So be sure to check that out on the page for this episode. The link to it is in the show notes. As always, if you have any questions, you can either leave it on the page for this episode in the comments section, or you can email me directly using shireen@urdusikhe.com. With that, I bid you खुदा हाफिज। आगाज़ को कमतर समझा जाता है, आगाज़ को कमतर समझा जाता है, बस शुरू करना नामुनासिब तैयारी के साथ, नामुनासिब तैयारी के साथ, क्योंकि आप कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं होंगे। कामयाबी के गैर मुतनासिब इम्कानात के साथ, क्योंकि इम्कानात कभी भी कामिल नहीं होती। शुरू करें। एक बेयकीन शख्स की आजिज़ी लिए हुए और एक ऐसे शख्स का जोशो जज्बा लिए हुए जो जानता हो कि ये मुमकिन है।